Hi, guys. Hello, and welcome to Bilalism World Cup 2023 series. And this will be my last video on the subject of World Cup 2023. बहुत कुछ देखा हमने, बहुत कुछ सहा हमने, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, सबके अपने ओपिनियंस हैं, और officially we are out of the World Cup, right? Um, जितने मुंह उतनी बातें, and this is another move, one more बात. और मैं इतना ही कहूँगा यार कि देखा जाए अगर, तो ऐसा फ़ील होता है कि दिस इज़ नो डिफरेंट टू एनी अदर वर्ल्ड कप। चाहे वो आप 2019 देख लें वेयर रन रेट की वजह से हम बाहर हो गए, चाहे आप 2015 वर्ल्ड कप देख लें जहाँ पे क्वार्टर फाइनल में हम लोग एंड में बाहर हो गए। द बैटिंग परफॉर्मेंस इन दैट गेम वाज नॉट अप टू par, जिसमें रिपीटेड मिस्टेक्स बैटिंग ने की थी। उसमें Pakistan's most successful test captain Misbah was leading the team. फिर अगर आप 2011 का वर्ल्ड कप आप देखते हैं तो उसमें सेमीफाइनल में where the team was decently strong for the conditions, Shahid Afridi and whoever the selectors were did a very good job in 2011, जिसमें वो according to the conditions they took 3 spinners, 2 main spinners and 1 backup. Afridi and Saeed Ajmal were top class spinners. And then Hafiz was always an added option जो कि open भी कर सकता था against lefties. So बहुत powerful उनका spin lineup थी, and you could see that in the semi-final too. They put a lot of pressure on India. But batting में choke कर दिया उन्होंने, वरना final में जा सकती थी वो team. 2007 was a disaster. 2003 was a disaster. So अब अगर हम देखते हैं इस वर्ल्ड कप को, टीम तो बाहर हो गई है। टीम ने ऑब्वियसली बहुत अच्छा नहीं खेला, बहुत अच्छा एवरेज भी नहीं खेला अपने स्किल सेट के लिहाज से। So how does one sum up this World Cup, right? That really is the question. किसको sum क्योंकि जब हम वर्ल्ड कप्स टिपिकली जब ख़त्म हुए हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के करियर्स भी ख़त्म हुए हैं, राइट? यू लुक एट 2007 इंजमाम, 2003 का तो हमें पता ही है कि पूरी की पूरी जो उस वक्त जो बैच था, they all got kicked out of the team and they had a complete reboot on the team. 2007 Inzamam, 2011 Afridi pretty much was done. He played after that, but he was pretty much done at that point. 2015 was Misbah, and 2019, even though it was not supposed to be, but they made Sarfaraz's last World Cup. That even though Sarfaraz had a lot of time left, I'm still of the opinion that Sarfaraz should have continued to captain till this World Cup, or ye waqt tha Babar ke take over karne ka. In actuality, एक अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये लोग काम करते, सिस्टम्स अच्छे होते, मैच्योर लोग बैठे होते ऊपर जिनकी अपनी ईगोज इन्वॉल्व नहीं हैं, देन यस, तरीका यही था। सरफराज को एक और वर्ल्ड कप मिलता कि भाई ठीक है, यू हैव एक्सपीरियंस्ड वन वर्ल्ड कप, you lost, but you had enough on your resume or on your CV to now go try one more World Cup because you did win Champions Trophy for us. और अब तक बाबर जो है एज वाइस कैप्टन तैयार हो गया होता टू टेक ओवर इन ODIs. T20 दे देते चाहे बाबर को 2 साल पहले, अगर सरफराज फेल होता इन द 20 व्हाट वाज इट द 2020 T20 वर्ल्ड कप, अगर वहाँ सरफराज फेल होता तो फिर बाबर को दे देते। But anyway, ये सब नहीं हुआ. Now, once again, 4 years after 2019, we're standing at this spot, which is not too dissimilar to 2019, where आपका जो कैप्टन है, he is उसका करियर ख़त्म नहीं हुआ है एज़ कैप्टन, he is not old, um, or not old enough to retire anyway. तो आगे का क्या रास्ता है, राइट? और मैंने पहले भी कहा जितने मुँह उतनी बातें। एंड आई सी दैट ऑल ऑफ यू गाइस लव ए स्पोर्ट्स, राइट? ए स्पोर्ट्स पे सब तारीफ़ों पे तारीफ़ें, इंडिया में भी तारीफ़, पाकिस्तान में भी तारीफ़ कि भाई क्या शो है, क्या शो है। ये सब के सब जो वहाँ लोग बैठे हैं ना, दे आर ऑल लूज़र्स। और मैं लूज़र्स उनको इस लिहाज से नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। दे आर एक्चुअली फैक्चुअली लूज़र्स, राइट?
Wasim Akram had his best chance in 1999. He lost. In 2003, he failed as a bowler, where he had another chance of redemption after getting called out by Justice Qayyum as a potential fixer. He had chance for redemption. He failed again. Waqar Yunus is not there on A Sports now, but he used to be there. Complete failure, right? 1992 का जो है वो रोते रहते हैं वकार यूनुस, but in 1996 he was the reason why India scored 288. 1999 में तो वो टीम में नहीं आ पाते थे, and in 2003 he was captain, but he failed as captain and as bowler. First round exit. Then the other person that sits there is Misbah ul Haq. Misbah ul Haq got an entire World Cup. First as a player in 2011, where with the bat he could have won. He failed. Not only did he fail in 2007 in T20, वो तो एक अलग format है, ठीक है, but he failed in 2007. हाँ, he brought us close. But ये पाकिस्तानी players की जो बात है ना कि इनको कभी भी गेम खत्म करना आता ही नहीं. It was the same thing with Misbah. Complete abject failure of a guy जिसने इतना, ये लोग डोमेस्टिक की बात करते हैं ना, मिसबा ने तो बहुत डोमेस्टिक खेला था उससे पहले, बहुत एक्सपीरियंस था, but he failed in 2007. जितना भी बोल ना वो मेरा तो ये शॉट था, मेरा तो वो शॉट था, मैं तो उसको ऐसे आंखें बंद करके मार देता था शॉट को. The fact is, it was a shot that was not needed. He made the wrong decision. और आज तक उस इंसान में इतनी वो नहीं है जिसको कहते हैं ना ओपन माइंडेडनेस, एक्सेप्टेंस, कि ये कहे कि हाँ यार, I picked a very low percentage shot at a time where my country could have won the game. नहीं मानना है, ठीक है. Then you have Shoaib Malik. Shoaib Malik was captain of the team in 2007. उन्होंने क्या किया भाई? What was his contribution in that game? And any other World Cup for that matter when he played. He was there in 2019 under Sarfaraz. उनसे runs ही नहीं हो रहे थे. It got to the point where Sarfaraz had to drop him permanently. वो आज तक retire नहीं हुए. He sits on TV. He thinks he can analyze batting. He has no idea. And I'm telling you guys, even though I'm a club cricketer, but the way I was trained, I can promise you that I know a lot more about power hitting and batting than someone like he does. अब वो इंसान कैसे खेल गया international cricket, कैसे खेल गया इतने सालों तक, is beyond me. Your guess is as good as mine. But anyway, coming back to losers, तो ये लोग हैं जो वहां बैठे. उस पूरे ग्रुप में ना, there used to be just one person that I respected, and that was Wahab Riaz when he was there. Wahab Riaz ने कभी भी ना, he never made anyone sound like he knew more than them, चाहे वो current cricketer हो जो अभी खेल रहे हो, चाहे वो वहां पे लोग जो बैठे हुए हों. He always used to say कि मेरे experience में मैंने ये देखा है, बस, that's it. He would stop right there because he knows what kind of a bowler he was, what his limits were, what his talent was. That's a sign of a good, mature person. But anyway, so that's A Sports. और so उनकी तो बात देखना, बात सुनना बेकार है, because you know in 2019 Wasim Akram and Misbah ul Haq were behind removing Sarfaraz at the time. कि भाई कि performing captain होना चाहिए भाई, बाबर को लाओ. उन्होंने they paved the way कि किसी तरह बाबर आ जाए. अब बाबर आ गया. बाबर पहले जो है कराची किंग्स में वहां का कैप्टन था, पहले खेलता था वहां, फिर कैप्टन बना उनका. वसीम अकरम started to have issues with him, जब वो नहीं जीत रहा था. वो issues आज तक नजर आते हैं वसीम अकरम की बातों में for बाबर आजम. What he cannot deny is the fact कि बाबर आजम बहुत बड़ा बैट्समैन है, पाकिस्तान का potentially the greatest future batsman ever, right? So वो तो वो deny नहीं कर सकते. So गोलमोल अपने स्टाइल में जो है वसीम अकरम keeps spewing hatred and poison against Babar. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ that Babar is a great captain or a good captain even. मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बाबर जो है उसकी जो
tactics hain on the field, they make sense. Sometimes they just absolutely don't make sense at all. मैं ये बात कह रहा हूं that we have seen कि पाकिस्तान में captains need a long time to become mature captains. कोई और वहां पे तरीका नहीं है कैप्टनसी सीखने का या लीडरशिप सीखने का. I also understand that Sarfaraz naturally was a better captain than Babar. वो तो भाई एक natural चीज है ना. उसने कहीं पे बचपन में देखा, सीखा, whatever happened to him. उसको system की वजह से ये वो नहीं बना. He just has some instincts that are very, very good. But there were times when those instincts didn't work. Against India in 2019, in Asia Cup in 2018, they didn't work. But जहां तक बाबर की बात है, बाबर के पास 4 साल थे. He built his team. When there was 1 year left in the World Cup, he and his players, they all decided that 2023 was the year कि जहां ये पूरी दुनिया में जाके इन्होंने T20s खेले. हालांकि इनको पता था कि 10 महीने में ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है. पूरी दुनिया में जाके ना इन्होंने गिन गिन के कोई नहीं छोड़ी जगह. जहां मिला चांस खेला इन्होंने वहां जाके. शाहीन आफरीदी पागल हो गए with brand new ball, wickets पे wickets, in T20 blast in England. की वीडियोस भरी हुई हैं यूट्यूब पे उनकी. पूरी जान लगा रहे हैं वो. Commentators going crazy, players going crazy, Pakistani fans going crazy. But no one is thinking, especially Babar, कि यार ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी कहाँ है. ये सारी टीम्स तो जो पाकिस्तान आती हैं वो तो सारी बी टीम्स और सी टीम्स हैं. ये तैयारी होगी कैसे? That I think is the biggest crime that Babar committed. कि उसने ये सोचा कि बिकॉज पिछले 4 साल में हमने ओडीआईज अच्छे खेले हैं, वी आर अ सेटल्ड टीम एंड वी विल बी फाइन. और कहीं उसके दिमाग में ये होगा कि शायद T20 और ओडीआईज में डिफरेंस नहीं है. बस दैट इज वेयर आवर कैप्टन वेंट रॉन्ग. हम ये भी जानते हैं कि बाबर आजम इज नॉट अ स्टूपिड गाय. बाबर आजम इज एन इंटेलिजेंट गाय. कुछ पैटर्न है उसके डिसीजंस में दैट मेक नो सेंस, जिस पे अभी मैं आता हूँ 1 मिनट में. बट अदर देन दैट वी नो दैट बाबर इज अ ब्राइट गाय. इज रिजवान एज ब्राइट एज बाबर? एब्सोल्युटली नॉट. वो उसकी गेम में नजर आता है. हिज गेम इज ऑल ओवर द प्लेस. वो इंसान सही से सीधे बैट से कवर ड्राइव नहीं मार सकता थ्रू कवर्स. उसने कुछ गेम्स में मारी. I don't know how that even happened against Sri Lanka. He played some shots in the game against Sri Lanka that he typically never plays, which confuses me. If he sometimes can play those shots, वो पे क्रॉस क्यों मारता है लेग साइड पे? ये ओडीआई है, ये T20 नहीं है, मजाक नहीं है भाई. You are there to spend time, and when you play with a straight bat, it increases your chance of playing a long inning. But he doesn't. Again, your guess is as good as mine. मेरा इसमें कहना ये है कि इन लोगों को प्रोफेशनलिज्म जो है ना क्रिकेट का और बैटिंग का ये समझ में नहीं आता है. And all these people sit on TV, including ex-players, current players. So, and I'll tell you where my confidence comes from. I was lucky enough to be coached by Mohammad Ashraful. I don't know how many of you know Mohammad Ashraful. He used to be a regular test player, one-day player, and T20 player for Bangladesh. He was visiting a couple of years ago, a few years ago, where I live. और पूरा एक सीजन जो है ना, I was lucky enough to spend with Mohammad Ashraful. और मैं अशरफुल के पास गया. मैंने कहा मुझे अपना गेम जो है इसको बदलना है. मैं बहुत बैकफुट पे फंस गया हूँ. बैकफुट का प्लेयर हूँ. मैं कट शॉट अच्छा खेलता हूँ, मैं फ्लिक अच्छा खेल लेता हूँ, और लेग साइड पे जब बॉल आती है मैं उसको अच्छा खेल लेता हूँ. बट कवर ड्राइव जो है ना, जो कवर्स और एक्स्ट्रा कवर्स और मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ है, इस पे मेरा गेम नहीं है स्ट्रॉन्ग. सो ही कंप्लीटली चेंज्ड माय गेम. एंड विद टाइम मैं अपनी कुछ वीडियोस अपनी बैटिंग वगैरह की आई विल शो यू कि मैं किस इम्प्रूवमेंट्स की बात कर रहा हूँ. But this person completely changed my game, and he taught me how to hit from the crease without slogging. कि आप कवर्स पे भी छक्का मार सकते हैं, आप इवन पॉइंट के ऊपर छक्का मार सकते हैं फ्रंट फुट पे while driving by just opening the face, as long as your hand eye is good, as long as आपने जो momentum अपनी बॉडी का कोर यूज करके जो क्रिएट किया है, that the balance is in the right place.
तो अगर मैं कर सकता हूँ इस लेवल पे, राइट, तो कुछ तो गड़बड़ है दैट दीज गाइस, या तो इनके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, प्रोफेशनलिज्म में, कि ये लोग नहीं बदलना चाहते, दे आर अफ्रेड ऑफ चेंजिंग देयर गेम, जो भी, और वो डाला भी ये जो पुराने सीनियर्स हैं ना इन लोगों ने, नहीं आप उस लेवल पे पहुंच जाओ तो कभी अपना गेम जो है उसको बदलने की कोशिश मत करो। कुछ तो गड़बड़ है कि ये लोग उस लेवल पे पहुंच गए, टीम में आ गए, अब इनसे कोई चेंजेस ऐड ही नहीं किए जाते अपने गेम में। एक ही इंसान है जिसमें इंप्रूवमेंट नजर आती है पिछले 3-4 साल में, वो है बाबर आजम, या कुछ इंप्रूवमेंट नजर आ जाती है रिजवान में, लेकिन क्लियरली नजर आती है रिजवान में जो इंप्रूवमेंट है वो उसके एग्रेशन में है, which he created to improve his T20 game. वन डे गेम एंड टेस्ट गेम के लिए जो इंप्रूवमेंट चाहिए वो इनके पास नहीं है। नाउ आई टेल यू मैं किन इंप्रूवमेंट्स की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दैट लेट्स से आप जितना आप ऊपर जाते हैं लेवल में खेलते खेलते, जो कंसिस्टेंसी होती है बॉलिंग की वो बढ़ती जाती है। सो एज अ बैट्समैन यू हैव लेस ऑप्शंस टू स्कोर रन्स फ्रीली, मतलब आपको कट शॉट जो होता है जैसे बैकफुट पे आप खेलते हैं, वो सिर्फ आप जब खेल सकते हैं जब आपको कोई विड्थ दे, या पुल शॉट आप जब खेल सकते हैं जब आपको कोई शॉर्ट बॉल कराए, या आप सीधा छक्का जब मार सकते हैं जब आपके बिल्कुल स्लॉट में बॉल आ जाए। ये ऑप्शंस अवेलेबल आपके पास नहीं होते, या कम होते जाते हैं ये ऑप्शंस एज यू मूव अप levels of cricket. So what happens at that point is that एक चीज जो जो बेहतर होती जाती है जैसे जैसे आपके लेवल आपका ऊपर जाता जाता है, वो होती है पिचेस, कि यस अब आपको इजीली हिटेबल लेंथ नहीं मिलेगी, राइट, आपको हाफ वॉली नहीं मिलेगी, शॉर्ट बॉल नहीं मिलेगी, विड्थ नहीं मिलेगी आराम से, but what you will get is better and better pitches. So what that means is that you need to develop shots for in between lengths, मतलब जिस लेंथ को आप गुड लेंथ बोलते हैं, जो टिपिकली ऑन अ डोमेस्टिक पिच या क्लब पिच में जहां पे थोड़ी बॉल थोड़ी मूव हो रही होती है, आपको उसको डिफेंड करना पड़ता है, बिकॉज यू डोंट नो कि अगर ये, क्योंकि बॉल हैज मोर टाइम टू मूव, राइट, सो उसके एंगल्स आप कवर नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट अवेलेबल, तो वो उसको कहते हैं आप ब्लॉक कर लो, तो वो लेफ्ट पे अंदर मूव होगी या बाहर मूव होगी, बिकॉज यू ऑन द फ्रंट फुट ब्लॉकिंग इट, आपका चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाता है। बट जब आपको ये पता है लैटरल मूवमेंट ये जो इन स्विंग आउट स्विंग या सीम इन सीम आउट होती है इसको बोलते हैं, जब आपको ये पता है कि उस हाईएस्ट लेवल पे मैं 3-4 ओवर्स निकाल दूंगा, लैटरल मूवमेंट गायब हो जाएगी, देन ऑल यू नीड टू फिगर आउट इज कि ठीक है अब मूवमेंट तो नहीं है, राइट, मुझे लाइन पिक करना है एंड आई हैव टू हिट थ्रू द लाइन का मतलब है कि गुड लेंथ बॉल पे भी मैं अपना बैट जो है इसको थोड़ा ऊपर उठाऊंगा, मुझे उसको थ्रू द लाइन खेलना है, बिकॉज मैं गेस कर सकता हूँ कि जिस बॉल जिस लाइन से शुरू हो रही है वहीं पे एंड अप होगी जब वो मेरे पास पहुंचेगी, तो यू स्टार्ट प्लेइंग थ्रू द लाइन। अब थ्रू द लाइन खेलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका बैलेंस, राइट, और आपका कोर। उस आपको ऐसे वक्त इंपैक्ट करना है बॉल को जब वो अपने हाईएस्ट बाउंस पे हो, राइट, कि मतलब इसके बाद उसका बाउंस नीचे ही जाएगा, ये सबसे आइडियल टाइम होता है बॉल को हिट करने का, कि उसका जो इसको बोलते हैं टॉप ऑफ द बाउंस बॉल को मारना, टॉप ऑफ द बाउंस यू गोइंग टू हिट द बॉल। अब उसके लिए टेक्निक बनाई जाती है आपके गेम के लिहाज से, आपका कोच जो है आपको एनालाइज करता है और वो ये कहता है कि ठीक है भाई, फॉर यू टू बी एबल टू डू दिस योर बैट हैज टू बी ईदर बिहाइंड द लाइन और नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ द बॉल, डिपेंडिंग ऑन कि आपको टिपिकली कौन सी बॉल्स मिल रही हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइटी हूँ और मैं जब खेलने जाता हूँ मुझे टिपिकली बॉल्स मिलती हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप, जो थोड़ी सी कभी मूव हो जाती है बाहर और कभी मूव नहीं होती है। सो अब मैं टिपिकल एक फील्ड के साथ खेल रहा हूँ, राइट, मैं वन डाउन बैट्समैन हूँ, मैं खेलने गया हूँ, नाउ द सिचुएशन इज कि भाई वी आर 20 फॉर 1 विकेट, राइट, तीसरा चौथा ओवर चल रहा है, और उन्होंने जो फील्डर जो लिए हुए हैं वो ये लिए हुए हैं कि उन्होंने लॉन्ग ऑफ लिया हुआ है, राइट, और उन्होंने या तो थर्ड मैन लिया हुआ है या उन्होंने मिड विकेट लिया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या लाइन मुझे कराना चाह रहे हैं। अब मेरा काम है इसमें रन्स बनाना, आई एम वन डाउन बैट्समैन, सो थिंक ऑफ मी कि मैं बाबर आजम की जगह खेलने गया हूँ, मेरा काम है यहाँ पे 20 for 1 इन 4 overs कि मैं आई नीड टू टेक द अटैक टू द अदर टीम। अब उसके लिए आई कैन प्ले टू द मेरिट, अब वो मुझे गुड लेंथ करा रहे हैं, मैं मेरिट पे वेट कर रहा हूँ, मुझे जब विथ मिलेगी मैं खेल लूंगा हल्के से ना,
थ्रू along the ground मैं boundaries मार लूंगा, या मुझे width मिली तो मैं cut कर दूंगा. The problem with that approach is that that just means that you don't have enough shots against good length ball. और ये इस बात को किसी भी टीवी प्रोग्राम में कोई इसलिए नहीं करता because these guys don't really know. क्योंकि या तो ये बैट्समैन जेन्युइन नहीं है. आई एम प्रीटी श्योर जिस दिन बाबर आजम रिटायर होगा ना, या प्रॉपर कोई बैट्समैन रिटायर होगा, या इंडिया के प्लेयर्स अगर किसी टीवी पे बैठते होंगे, दे वुड डिस्क्राइब दिस. सो व्हाट यू रियली नीड टू डू इन दैट सिचुएशन इज कि आपको पता है कि भाई अच्छा बॉलर आके मुझे आउटसाइड ऑफ स्टंप कराएगा, या ऑफ स्टंप की लाइन कराएगा, थोड़ा सा बाहर मूव करेगा. यू नीड टू बी एबल टू हिट दैट बॉल थ्रू द लाइन ओवर कवर्स. कवर्स पे कभी भी फील्डर नहीं होता है, राइट? बिकॉज वो तो लाइन ही वो कराना चाह रहे हैं कि वहां पे उनको लगता है अब आउट हो जाएंगे. वो शॉट इतना स्ट्रांग होना चाहिए मॉडर्न डे बैट्समैन का कि वो थ्रू द लाइन ऑन द फ्रंट फुट बैट की थोड़ी सी हाइट जो है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के रखे एंड हिट इट ऑन टॉप ऑफ द बाउंस, राइट? दिस इज सच a good shot to play. अगर आप उसको मास्टर कर लें, I know it sounds very difficult, but if you master this shot, इस एक शॉट ने ना मेरा जो गेम है मेरे लेवल पे, क्लब लेवल पे बदल के रख दिया. Right? Sometimes they would have bowlers, that paid bowlers जो पुराने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं, वो आते हैं कराने, उनको भी मैंने ये शॉट्स मारे हैं. And so imagine with my limited talent, if I can do this, if the same kind of coaching was given to these guys that have extraordinary talent in the Pakistani team, ये लोग क्या करेंगे? But problem क्या है यार? That you don't even see them trying this, which means that कोई इनके साथ बैठ के स्टडी नहीं कर रहा है, या उनको गोल्स नहीं बता रहा है कि देखो ये तुम्हें करना है, दिस इज द ब्लूप्रिंट फॉर यू टू बी सक्सेसफुल एट दैट लेवल. देन यू वॉच समवन लाइक शुभमन गिल, कल का बच्चा है, राइट? अभी आया उनकी टीम में. लुक एट हिज शॉट्स. मतलब वो उसको हारिस रऊफ था, वो बॉलिंग कर रहा था, आई कैंट रिमेंबर हु वाज बॉलिंग टू हिम ऑन द फ्रंट फुट. उसको ये भी पता था कि बॉल मूव हो रही है, बट उसको क्योंकि पता था कि कंसिस्टेंटली एक ही बॉल करा रहे हैं, वो इतना ब्यूटीफुली उसको कवर्स के थ्रू मारता था गुड लेंथ बॉल को. उसने गुड लेंथ बॉल को जब मार दिया तो फिर आप क्या करेंगे? आप एज अ बॉलर, यू डन. You have to be extremely skillful to come back when batsman starts doing this because the pitch is good. ये डिफरेंस है पाकिस्तानी टीम में और बाकी टीम्स में. बाकी टीम्स को जब अच्छी पिच मिलती है, वो आप जितना भी अच्छा बना लेना, शाहीन आफरीदी दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर बन जाए, if he's bowling on a flat track, after 3 or 4 overs, when the swing is gone, everyone at that level, your top tier batsman है, they're going to play him through the line on the front foot. और वो कुछ नहीं कर सकता उस वक्त, सिर्फ वो उनको ट्रिक कर सकता है, चेंज ऑफ पेस कर सकता है, राइट? उनको सरप्राइज कर सकता है. बट if he consistently hits good length ball, they're going to still get boundaries and he's going to have no idea how to come back from it. And that, my friends, is the difference between the Pakistani team and everybody else. That everybody else has figured this out, whether it's New Zealand, whether it's India, Australia, South Africa, England, even Bangladesh, even Sri Lanka, by the way. Unke bhi jo opening batsmen hai, even Afghanistan, Gurbaz, all these guys play these shots through the line. वो aerial नहीं चाहते हमेशा. They just keep it down because that's an even better option, right? You still hit through the line, but you keep it down. Extremely safe. और जैसे ये लोग उनको सरप्राइज करने के लिए थोड़ा सा भी शॉर्ट जाते हैं, they're ready because वो already उनका balance ऐसा set हुआ होता है. They don't get too committed on the front foot, right? Because they're playing through the line. They just shift the weight a little bit to the back foot and boom, they just time it. और उनका बिलीफ इतना है इन शॉट्स में क्योंकि उन्होंने इतना सिंप्लीफाई कर लिया गेम को अपने दिमाग में कि यार ये आई एम थिंकिंग ऑफ वी कंसिस्टेंटली अनलेस द बॉलर फोर्सेस मी टू गो ऑन द बैक फुट, कि ऑल दे बिलीव इन इज हिटिंग द बॉल क्लीनली. और इन सब के गेम्स बहुत क्लीन है पाकिस्तानी टीम में इस वक्त, सिवाय बाबर के या अब्दुल्ला शफीक व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग. नो वन हैज अ क्लीन गेम. क्लीन गेम से क्या मतलब है कि इतना सिंपल कर लें आप अपने दिमाग में गेम that you end up timing the ball cleanly, right? Because उससे होता क्या है सिंप्लीफाई करने से, जैसे रोहित शर्मा बहुत ही सिंपल गेम है उसका, होता क्या है that you just end up getting that extra time because आपने कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं, इधर डांस करके इधर पहुंच गए उधर पहुंच गए. जैसे इमामुल हक इज टोटल जोक, दैट गाय, टोटल जोक.
All he's doing at that level is that he's worked very hard on his game to survive. उसी में उसको बाउंड्रीज मिल जाती हैं, बट उसका जो टैलेंट जो चाहिए होता है ना, एक जो होता है ना, क्या बहुत सारे लोगों के साथ खेलते हैं, बट कुछ लोगों में एक एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, एक एक्स्ट्रा लेवल होता है उनका, वो उसमें नॉन एग्जिस्टेंट है कंप्लीटली. सो ये प्रॉब्लम है, एंड दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द पाकिस्तानी बैटिंग एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसको जो है ये लोग कहते हैं मॉडर्न डे बैटिंग, मॉडर्न डे बैटिंग. हाँ सही है, कह लो मॉडर्न डे बैटिंग, बट एट लीस्ट टॉक अबाउट इट प्रॉपरली. एक इंसान यार, ए स्पोर्ट्स हो गया अपना, कोई भी हो गया, इवन जो बेस्ट पाकिस्तानी जो एनालिसिस करने वाला एक इंसान है पाकिस्तान में, जो बेस्ट एनालिसिस करता है गेम का ऑन यूट्यूब, एंड दैट इज सलमान भट्ट. जो किसी को बोलना है बोल ले उसके पास्ट के बारे में. दैट गाय नोज क्रिकेट. वो जो है ना, सबसे बड़ी जो अनफॉर्चुनेट चीज है ना पाकिस्तान की, वो ये कि उस इंसान ने फिक्स किया गेम, और वो सबसे स्मार्ट कैप्टन जो पाकिस्तान को मिलने वाला था, उसने अपनी बेवकूफ़ी से, अपनी गलतियों से हमको भी महरूम कर दिया उससे, और अपने आप को भी. एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी करियर बनता उसका एज कैप्टन, बट वो एक बंदा है, बट वो भी जो है ना, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज नॉट अ ट्रू पावर हिटर, उसको भी ये चीज नहीं पता. वो भी इस चीज को सही से कवर नहीं करता. सो आई मतलब कोई भी नहीं है बेसिकली. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज कि पाकिस्तानी शोज में, पाकिस्तानी व्लॉग्स में, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में, देयर इज नॉट इवन वन पर्सन दैट अंडरस्टैंड्स पावर हिटिंग. और पावर हिटिंग बोल देते हैं उसको, कि नॉर्मल टेक्निक के साथ हाउ कैन यू बी सो डोमिनेंट लाइक शुभमन गिल, रोहित शर्मा, कोहली. किसी को नहीं पता है, एंड दैट इज वेरी वेरी सैड. ये लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, जैसे अब्दुल्ला शफीक भी है, टैलेंट है, ही इज गुड, ही इज द क्लोजेस्ट थिंग टू अ प्रॉपर मॉडर्न डे बैट्समैन इन पाकिस्तान, कि भाई he ends up coming down the track sometimes. There is no need for that. So जब तक कि ये लोग किसी ऐसे इंसान को हायर नहीं करेंगे जो ट्रूली मॉडर्न डे गेम समझता है, पाकिस्तानी बैटिंग विल सफर. ये बाबर आजम के उस पे बलबूते पे जो है करते रहेंगे बातें, प्लान्स बनाते रहेंगे. जिस दिन बेचारे पे ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, जैसे इस टूर्नामेंट में आया, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, he didn't perform. Look at the team. Where was Rizwan? He's the savior, right? Where was he in the end? He didn't do anything. Abdullah Shafiq, yeah, he showed glimpses of what he can do, but he couldn't continue either. They all sucked. शादाब पिछले 5-6 पता नहीं कितने साल से उस पर इन्वेस्टमेंट चल रही है, कुछ नहीं करके देता वो बड़े टूर्नामेंट्स में. वो एक युवराज को उसने क्या आउट कर दिया था, प्लम है. हमारी जान ही नहीं छोड़ता वो. वाइस कैप्टन वो हैं, लेकिन ड्रॉप भी वही हो जाते हैं. सो ये जो स्पेस क्रिएट हो गया है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में एंड द रेस्ट, ये बाबर आजम की गलती नहीं है भाई. ये सरफराज की गलती भी नहीं थी 2019 में. मिसबा की गलती आप कह सकते हैं, यस, बिकॉज मिसबा वाज अ वेरी सीनियर प्लेयर. बट उससे मिसबा से बात करो तो वो तो बात करता है बैट स्पीड की. बैट स्पीड ये होती है भाई, बैट स्पीड इज अ वेरी स्मॉल फैक्टर in the way modern batsmen hit the ball. It's bat speed, it is your back lift, it is your timing, it is how close your hands are to your thighs or to your back thigh, जिसकी वजह से आपका बैट सीधा रहता है, जिसकी वजह से क्लीननेस आती है आपके शॉट में. बाबर आजम एंड अब्दुल्ला शफीक बोथ, उनका जो बैक लिफ्ट है बिल्कुल पीछे से स्ट्रेट बैट आता है, राइट? इस वजह से जब वो लोग मारते हैं, कवर ड्राइव हो गई या स्ट्रेट ड्राइव हो गई, बहुत क्लीन लगता है शॉट, बिकॉज दे हैव द एंटायर फेस अवेलेबल. बाकी किसी का बैट पॉइंट से आ रहा है, किसी का बैट घूम के पता नहीं किस एंगल से आ रहा है, कि वो एंड में क्लीन ही नहीं होता. वो रिजवान का तो मुझे समझ में नहीं आता वो बैट करना क्या चाह रहा है. वो एंड में लग जाता है उससे, बिकॉज उसमें टैलेंट तो ज़ाहिर है, हैंड आए तो उसकी है बहुत अच्छी, बिकॉज ही इज ऑब्वियसली अ टैलेंटेड गाय. और उसका जो बेस जो गेम है, नाच नाच के एंड में वो रोक लेता है उसको, या कभी बाउंड्री लग जाती है. फिर जब वो सेट हो जाता है, राइट, व्हेन ही सेट 40 रन उसके हो गए, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट टू सी अ मच बेटर गेम फ्रॉम रिजवान. जब वो उसका ही स्टॉप्स द डांस, दैट्स व्हेन ही स्टार्ट्स प्लेइंग सिंपल. उसका गेम सिंपल हो जाता है, फिर उसकी मूवमेंट भी कम हो जाती है, राइट? सो ये जो प्रॉब्लम है ना रिजवान की, दैट ही हैज टू गेट सेट फर्स्ट. ये नहीं है मॉडर्न डे में, ये नहीं होता है. एवरी प्लेयर कम्स सेट. वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं, दैट व्हेन दे आर आउट देयर, देयर गेम इज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड.
ये पाकिस्तानी प्लेयर्स ही हैं जिनको अभी भी बहुत टाइम चाहिए होता है सेट होने के लिए, और इमाम की तो हम बात ना करें तो अच्छा है। फ़ख्र है, उनमें मारने का टैलेंट है, लेकिन उनको भी अब आखिरी गेम में पता नहीं क्या करा था वो। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई देयर गेम्स आर नॉट सिंपल। दीज गाइस शुड बी सो सेट कि भाई मुझे भेजो, मुझे जाके मैं अपना गेम खेलूंगा, मुझे सोचना भी नहीं है, मुझे प्रेशर भी, मैं कोई हो प्रेशर या नहीं हो, मेरी इतनी प्रैक्टिस हुई हुई है that I am just gonna go and play my game. ये होते हैं टॉप लेवल बैट्समैन, प्रोफेशनल बैट्समैन। ये जो है ना पाकिस्तानी बैट्समैन, उनके हमेशा से है, दिस इंक्लूडेड सईद अनवर टू बाय द वे, कि उल्टियां हो रही हैं उनको गेम से पहले, वो नर्वस हुए में, यार ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ये लोग, क्या हो रहा है ये? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। जैसी एक्सपेक्टेशन आती है सब ढेर हो जाते हैं, चाहे वो अब ये टीम हो या वो हमेशा से पहले जो भी प्लेयर्स रहे हैं। सो समवन नीड्स टू सिट डाउन एंड ट्रूली अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है एंड व्हाट द मिसिंग लिंक्स आर, और उस लिहाज से आप चीज़ों को फिक्स करें। इन द मीन टाइम आई पर्सनली वुड नॉट टच द कैप्टन। इन द मीन टाइम आई वुड नॉट टच एनीथिंग। आई वुड ट्रूली डू अ प्रॉपर एनालिसिस कि ये हो क्या रहा है। If honestly, if I were them, I would hire someone like Owen Morgan. I would hire someone like Ricky Ponting. I would hire Kevin Peterson and give them 2 years contract. बहुत पैसा दें उनको। इस तरह सोच लें कि अगले जो 20, 25, 30 साल है ना पाकिस्तानी क्रिकेट के, वो इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता उनका बैटिंग में। एंड देन उनके साथ जो है लगाएं पाकिस्तानी बैट्समैन को और उनको सिखाएं ये जो बेसिक जो हमें नज़र आ रहा है डिफरेंस इन पाकिस्तानी बैटिंग, और ये हमेशा से है यार, ये मुझे तो 1999 से नज़र आ रहा है। गिलक्रिस्ट याद है किसी को? हाउ ही वुड कम एंड ही वुड हिट वसीम अकरम एंड वकार यूनिस एंड शोएब अख्तर थ्रू द लाइन, वो ऊपर मिराफ के ऊपर से छक्का मार देता था उस वक्त नई बॉल पे, वो सईद अनवर तक सोच भी नहीं सकता था वो करने का उस वक्त। स्ट्रेट डाउन वो फ्लिक, सईद अनवर वाज गुड, कट शॉट ड्राइव ही वाज गुड, but to take a fast bowler like Wasim Akram Wakar Yunus and hit them straight over their head for a six in the beginning, or would be best a shot, no? On the up, on top of the bounce, he would just punch it back. Six. So, so space to create हो गया यार, और ये बहुत पहले से create हो रहा है ये. And all these people that are talking power hitting this, power hitting that, Wasim Akram was also not a power hitter. He was a slugger, right? Let's just be very, very clear about that. So, ये सब तो भाई fix करना होगा. There is no way around it. And all the fans that watch, my request to you guys is that our team sucks, our cricket sucks right now. Do we deserve better? Yes. जिसका ऐसा loyal fan base हो, जो इतना passionate हो, that fan base deserves better. Yes. But unfortunately, जो लोग in charge हैं, अगर उनका intent अच्छा हो भी, they don't understand these things that I've just talked about. So कैसे उनको ये समझ में आएगा? कौन उनको इस पे education देगा? ये जब तक नहीं हो सकता जब तक वो ये नहीं कहें कि यार हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे इम्प्रूव करें। पहले एक्सेप्ट करें कि प्रॉब्लम है, फिर उसको आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम है क्या, और फिर ओपन माइंड से कहें कि हमें सोल्यूशन चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में मिलें चाहे वो बाहर मिलें, वो वी नीड सोल्यूशंस। और वो एक नए सिरे से फ्रॉम जीरो दे स्टार्ट एंड दे टीच। MRF पेस फाउंडेशन जैसे इंडिया की थी ना, हम उनकी हमेशा से मजाक उड़ाते हैं इंडिया का कि ये तो देखो वेजिटेरियन है, तो ये तो स्पेस नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। पेस उनके पास है, स्विंग उनके पास है, अब रिवर्स स्विंग उनके पास है, सीम उनके पास है। सो क्या हुआ ये, राइट? What that means is when you identify and accept a problem कि आपके पास एक चीज मिसिंग है, फिर आप उस पर जब काम करते हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका आपको फायदा होता है। हार्ड वर्क नेवर एवर गोज टू वेस्ट। एंड वन लास्ट रिक्वेस्ट is please, guys, understand that Wasim Akram is an absolute traitor. इतना बड़ा फास्ट बॉलर, इतना टैलेंट, एक कोई मुझे उसकी सर्विस दिखा दे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, एक। राइट? कुलदीप को उन्होंने ट्रेन किया है, इरफान पठान उनको थैंक यू बोलता है, गौतम गंभीर उनको थैंक यू बोलता है,
for whatever he did at Kolkata Knight Riders. Yep. What has Wasim Akram done for Pakistan except selling it? ये मुझे कोई एक बता दे इनका जो अचीवमेंट है. आए उन्होंने अपने पैसे बनाए. टैलेंट तो था भाई. He was a great fast bowler. ये कोई डिनाई नहीं कर रहा है. But he is 100% a traitor and an alleged match fixer. This is harsh reality that we all need to understand and remember. And anyone that associates themselves with Wasim Akram, whether it's A Sports or whoever they are, they need to understand what they're doing, because I'm telling you, yes, it's very difficult right now in Pakistan to take down people that have done this to the country, because sabhi gande hain. But time will come when there will be reckoning, and anyone that is complicit, their names will come up. Then please don't cry then. मैं एज अ फैन, मैं तो बस इसकी बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा ना वो टाइम, मेरा जब दिल टूटा था व्हेन आई वाज अ किड, किस तरह से वो गेम था अगेंस्ट इंग्लैंड इन शारजा व्हेन आई थिंक वाज मंजूर अमजद, वो आके वो आदमी बॉलर जो है वो आके किस तरह 50 कर रहा है, वसीम अकरम ने अपने आप को प्रमोट किया, डिस्ट्रॉयड द गेम. आई वाज देयर, आई क्राइड दैट नाइट एज अ फैन, एज अ किड. आई स्टिल रिमेंबर दैट डे दैट आई प्रेड and I said, okay, I don't understand हमारी टीम जो ऐसे क्यों खेल रही है. I was crying and I was about to go to sleep, but I was crying in my prayer. And I asked God that please, make them play better. That is how involved I was as a fan, as a kid. This is around 1999. फिर उसके बाद ये लोग इंडिया गए, वहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन अच्छा खेलना शुरू कर दिया, है ना. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती थी पहले 90s में. ये ऑल ऑफ अ सडन जाके जबरदस्त 99 में इंडिया को हरा रहे हैं, श्रीलंका को हरा रहे हैं, हैट्रिक्स हो रही हैं. वर्ल्ड कप में गए, पता चला जावेद मियादाद जो है उनका, ही इज नॉट कोच एनीमोर. वर्ल्ड कप में जा रही है टीम 1999. Wasim Akram and Javed Mirdad had differences. Javed Mirdad resigns. Wasim Akram is taking the team into the World Cup without a coach. ये जो इन लोगों ने किया है ना 1999 में टीम के साथ, I don't know about you guys, but I can tell you I will never, ever be able to forgive someone like Wasim Akram, or for that matter Waqar Yunus, or for that matter Mushtaq Ahmed, or for that matter Salim Malik, or for that matter Ijaz. These are not good people. And just because someone is not a good person does not mean कि उनके पास talent नहीं था. These were talented people that always thought that they could do whatever they want with Pakistan cricket. इन लोगों ने हमारे दिलों के साथ खेला, हमारे पैशन की बेइज्जती की, और आज ये बैठ के ये बोलेंगे कि someone like बाबर आजम को कैप्टन होना चाहिए या नहीं. No. हजार वसीम अकरम कुर्बान है बाबर आजम जैसे प्लेयर पे. And one more thing I want to say, that people can say what they want about Salman Butt, but वो उस इंसान की जो भी उसने गलती की थी उसकी उसको सज़ा मिली, उसको बहुत एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी. कैन यू इमेजिन द एम्बैरेसमेंट ही फेस्ड. उसका his wife was expecting. वो गया, उसने वहाँ टाइम गुजारा जेल में, वो वहाँ से फिर निकला, उसने कोशिश की अपना करियर दोबारा बनाने की, किसी ने नहीं बनाने दिया उसको. क्यों नहीं बनाने दिया भाई? सोसाइटी में यही होता है ना, आपने सजा दी उसको, उसने सजा काटी, अब उसको 2 सेकंड चांस. Why does he not get the same respect that others that were alleged fixers, and we're all pretty sure कि बाकी सब fixers थे, उनको बहुत इज्जत मिलती है. जो इंसान बेचारा सजा काट के आया है, उसका सेकंड चांस कब मिलेगा उसको? सबसे अच्छा एनालिसिस भी उसका है, बजाय इसके कि उसकी स्किल को यूज किया जाए. People still don't respect him. We're living in some kind of upside down world, but it's sad, guys. Sad. I really hope that people can start looking at this properly. But guys, please don't forget to like this video, subscribe to the channel. It's really going to help. Let's get the word out. And I'm gonna keep covering
Pakistani cricket as much as I can on जब कोई बड़ी news बाहर आएगी. Although I will now switch to different topics because there's a lot that I like talking about, and whoever's listening, if I can help them in any way, I would absolutely love that. Take care, guys. You guys take care. Hopefully, we're gonna do better in the coming series and World Cups and the T20 World Cup next year. You guys take care. Bye.